Morning students, today we will be discussing our topic operating system, and what are topics that we will be covering here is what is operating system, what it does, computer system organization, then is computer system architecture, operating system structure, operating system operations. After that we will be discussing about the process management, memory management, storage management, protection and security, kernel data structures, computing environment and open source operating systems. First, the objectives of our presentation here we will be discussing is to describe the basic organization of computer system, what components in a computer system consist of. Then we will be discussing about the grand tour of the major components of operating system, then to give an overview of many types of computing environment and to explore several open source operating systems. Now, everybody of you will be listening about the term what is operating system. Now, the basic definition of operating system is it acts as an intermediary between user of the computer and the computer hardware. We are the user of the computer and the computer hardware is that component which we can feel, which we can touch, like your computer system, the keyboard where you can press any key to do any kind of functionality or do any kind of operations on your computer. Like your mobile phones are also an example when you are typing any kind of a message. So when you are using the keypad, you are the computer user, and keypad on which you are using the keys and pressing and typing is the computer hardware. Operating system goals. What are the operating system goals? It executes the user programs and making solving user problems easier. Operating system का what is the target? Its target is कि हम लोगों को जो भी user ने कुछ भी programs दिए हैं that we have to solve and making that problem solving easier for the user. This is the task of the operating system. Second point is make the computer system convenient to use. It's make the computer system convenient to use and they use the computer hardware in an effective manner. Operating system enables us to use the computer hardware in an effective manner. Then comes computer system structure. Computer system can be divided into four components. First is hardware, next is operating system, third is application programs, and fourth one is users. Hardware, these are the basic computing resources like CPU, memory, input output devices with the help of which we are perform any kind of functionality. Operating system, what is the role of operating system? It controls and coordinates use of hardware among various applications and users. Application programs, third one is application programs. It defines the way in which system resources are to be used to solve computing problems of the user. For example, let's say one of the student wants to play Candy Crush game on the system. So first of all, first step is you had to download that application software on your phone from the Play Store. After this is being installed, then you start playing it. You play according to that application being installed in your system, which version you have installed. See, तो basically application program का role क्या है, ये define करता है way in which system resources are to be used to solve the computing problems of the user. Like computing problem इस case में user की क्या है कि game खेलना, he wants to play game for entertainment purpose, for relaxing himself. So for that one application is being designed. Examples of application programs are word processors where you can write a Word document, compilers, web browsers on which you can see or you can browse the particular website, database systems, video games, etc. Next is users. Users, who are the users then? People. We people are the users, machines and other computers. These are the users on which we perform, with the help of which we are performing the task. Next four components of computer systems are such kind of. This is a diagram which is showing first is computer hardware. Operating system is intermediary layer between the computer hardware and the user. In between there is another layer which is consisting of the compilers, assembler, text editor, database system. This is system and application program layer which comprises of the users, user 1, 2, 3. We can have a number of users over here. What operating systems do depends upon the point of view. Operating system क्या काम करता है? It depends on what kind of problem you are using it for solving.
Users want convenience, ease of use, good performance, so operating system is needed for that purpose. Don't care about the resource utilization, but shared computers such as mainframe or mini computers must keep all users happy. ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है? हम लोगों को ईज़ ऑफ यूज़ प्रोवाइड करना, गुड परफॉर्मेंस प्रोवाइड करना, रिसोर्स यूटिलाइजेशन के लिए क्यों बॉदर नहीं करना, बिकॉज एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स इज़ डन विद द हेल्प ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है जी. यूजर्स ऑफ डेडिकेटेड सिस्टम सच एज वर्क स्टेशंस हैव डेडिकेटेड रिसोर्सेज बट फ्रीक्वेंटली यूज शेयर्ड रिसोर्सेज फ्रॉम सर्वर्स. Handheld computers are resource poor, optimized for usability and battery life. Some computers have little or no user interface such as embedded system in devices and automobiles. कुछ ऐसे कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं जिनके पास लिटल या नो यूज़र इंटरफेस जितना कोई भी डिवाइस नहीं होती, जैसे कि आपके कई डिवाइसेस में, कई ऑटोमोबाइल्स के अंदर जो कि डायरेक्टली परफॉर्म करते हैं अपना टास्क. ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम एक डेफिनेशन की बात करें तो ये एक तरह का रिसोर्स एलोकेटर होता है. ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ रिसोर्स एलोकेटर. इट मैनेजेस ऑल द रिसोर्सेज, डिसाइड्स बिटवीन कॉन्फ्लिक्टिंग रिक्वेस्ट फॉर एफिशिएंट एंड फेयर रिसोर्स यूज़ के लिए, ताकि आपका जो भी एक पर्टिकुलर प्रोसेस रिसोर्स के लिए डिमांड कर रहा है वो एफिशिएंटली इसको यूज़ करे. देयर विल बी नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन. सेम टाइम पे दो प्रोसेसेस आर आस्किंग फॉर अ रिसोर्स, एक सिंगल रिसोर्स के लिए, तो वो देखेगा कौन सा प्रोसेस टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग पहले आया है उसको वो ग्रांट करेगा. अगर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे आपका किसी भी रिसोर्स को एलोकेट करना है. फॉर एग्जांपल इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं बस क्यू का. व्हेन यू आर स्टैंडिंग इन द बस क्यू वेटिंग फॉर द बस, सो द पर्सन हु बोर्ड्स द बस फर्स्ट इज द पर्सन हु इज स्टैंडिंग इन द रो फर्स्ट in the queue waiting for the bus. Operating system is the control program. Now what does this mean, control program? It controls the execution of program to prevent errors and improper use of the computer. नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम डेफिनेशन को अगर हम और फर्दर कंटिन्यू करते हैं, नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन. इसकी कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है. एवरीथिंग अ वेंडर शिप्स व्हेन यू ऑर्डर एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज गुड अप्रॉक्सीमेशन बट वेरीज वाइडली. द वन प्रोग्राम रनिंग एट ऑल टाइम्स ऑन कंप्यूटर इज द कर्नल. अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक की टर्म्स यूज़ होता है कर्नल. आपसे बहुत बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज़ कर्नल. एक ऐसा प्रोग्राम जो सारा टाइम रन करता रहता है ऑल द टाइम ऑन द कंप्यूटर, तो हम उसको बोलते हैं कर्नल. एवरीथिंग एल्स इज आइदर अ सिस्टम प्रोग्राम और एन एप्लीकेशन प्रोग्राम. उसके अलावा कुछ भी अगर हम रन करते हैं वो सिस्टम प्रोग्राम का पार्ट होता है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के विद इन शिप होता है या फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम का पार्ट है. नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर एक टर्म और होता है, दैट इज़ अ बूटस्ट्रैप प्रोग्राम. इट इज़ लोडेड एट पावर अप और रीबूट टाइम. बूटस्ट्रैप प्रोग्राम हमारा कब लोड होता है? जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं. जब भी आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम यानी अपना कंप्यूटर को ऑन करते हो तो एट पावर अप और रीबूट टाइम पे. टिपिकल स्टोर ये कहाँ पर स्टोर होता है? रोम में स्टोर होता है विच इज़ रीड ओनली मेमोरी, और EEPROM जनरली नोन एज फर्मवेयर. Initializes all aspects of the system, loads operating system kernels and starts the execution. Bootstrap program का काम क्या है कि आपके कर्नल को लोड करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर और आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करेगा. नेक्स्ट कम कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर. कंप्यूटर सिस्टम का जो ऑपरेशन है, आर्किटेक्चर है, वो कैसे हम डिफाइन करेंगे? One or more CPUs, that is central processing unit, device controllers connect through common bus providing access to the shared memory. You are seeing a single bus जहाँ पर आपका CPU, एक से ज़्यादा CPU हो गए, device controllers हो गए, disk controllers हो गए, USB controllers हो गए, graphic adapters होंगे. They are connected through a single shared bus to a memory. Concurrent execution of CPU and device competing for memory cycles is done with the help of this. इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड CPU कैन एग्जीक्यूट कॉन्करेंटली. मतलब सेम टाइम पे दे कैन एग्जीक्यूट. इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से कोई इनपुट आ रहा है, कोई आउटपुट हमारा इंटरमीडिएट परफॉर्म हो रहा है ऑपरेशन, CPU कैन एग्जीक्यूट कॉन्करेंटली. ईच डिवाइस कंट्रोलर इज इन चार्ज ऑफ पर्टिकुलर डिवाइस टाइप. ईच डिवाइस कंट्रोलर हैज़ अ लोकल बफर. CPU मूव्स डाटा फ्रॉम एंड टू main memory to and from the local buffers. Input output is from the device to local buffer of the controller. Device controller informs CPU that it has finished its operation by causing an interrupt. Now what is the role of device controller? Device controller का रोल ये होता है कि ये CPU को इन्फॉर्म करता है कि it has finished its operation by causing an interrupt.
Common functions of interrupts. Now, what are the common function of interrupts? Interrupts transfer control to interrupt service routine, that is ISR. Full form is ISR. Interrupt transfer क्या कर रहा है? Control को transfer कर रहा है to interrupt service routine, generally through interrupt vector. एक interrupt vector के through the control is transferred to ISR, which contains the address of all the service routines. जो क्या कंटेन कर रहा है? एड्रेस कंटेन कर रहा है ऑल द सर्विस रूटीन्स का. इंटरप्ट आर्किटेक्चर्स मस्ट सेव द एड्रेस ऑफ इंटरप्टेड इंस्ट्रक्शन. ठीक है जी. इंटरप्ट आर्किटेक्चर को क्या मेंटेन करना पड़ेगा? सेव करना पड़ेगा एड्रेस ऑफ इंटरप्टेड इंस्ट्रक्शन. अ ट्रैप और एन एग्जीक्यूशन इज सॉफ्टवेयर जनरेटेड इंटरप्ट कॉज्ड आइदर बाय एन एरर और एन यूजर रिक्वेस्ट. एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरप्ट ड्रिवन. Interrupt driven means interrupt can occur in the operating system. Operating system preserves the state of CPU by storing registers and program counter. Determines which type of interrupt has occurred, pooling vectored interrupt system. Separate segments of code determine what action should be taken for each type of interrupt. This is an interrupt timeline where it is showing CPU and input device, user process is being executed, then interrupt, input output interrupt is being processed. तो कुछ टाइम के लिए आपका input output device क्या है? Idle है. Then it is again transferring, then again idle. Input output request, transfer data, done हो गया, then input output request, then is transfer done. Next come input output structure. After input output starts, control returns to user program only upon input output completion. Wait instruction idles the CPU until next interrupt. What is the role of wait instruction? Wait instruction का रोल क्या है? ये CPU को उस टाइम के लिए idle रखेगा जब तक next interrupt नहीं आता. Then comes wait loop, contention for memory access. दोबारा से wait loop का मतलब क्या? अभी भी हमारा CPU क्या idle state में चल रहा है. At most one input output request is outstanding at a time. No simultaneous input output is processing. After input output starts, control returns to user program without waiting for input output completion. A system call requests the operating system to allow users to wait for input output completion. Next is device status table. Device status table contains entry for each input output device indicating its type, address, state. OS indexes into input output device table to determine device status and to modify the table entry to include the interrupt. Whenever जब भी आपका इंटरप्ट अकर करता है तो सिस्टम कॉल होती है. दो तरह की कॉल्स होती हैं. वन इज सिस्टम कॉल, ये रिक्वेस्ट करेगी ऑपरेटिंग सिस्टम को कि यूज़र को अलाउ करे, वेट करे वो इनपुट आउटपुट कंप्लीशन के लिए. डिवाइस स्टेटस टेबल कंटेन्स एंट्री फॉर ईच इनपुट आउटपुट डिवाइस इंडिकेटिंग इट्स टाइप, एड्रेस एंड स्टेट. OS indicates into input output device table to determine device status and to modify table entry to include the interrupt. Next comes storage definition and notation review. This we will be discussing in the next class. Thank you.